Yes, yes. Yeah. Carry on. Today's chief guest, our respected past chairman CIRC, CA Abhay Kumar, CCM elect, respected chairman CIRC, CA Nilesh Gupta ji, respected secretary CIRC Shashikant Chandrakar ji, today's learned speaker AB of Global Market, Shri Ajay Bagga ji. Am I audible, sir? Yes, sir. Carry on. Connectivity. AB of Global Market, Shri Ajay Bagga ji. Viewers of virtual meeting, very good afternoon to all of you. Namaskar, Jai Shri Krishna. I, CA Devendra Kumar Somani, moderator of today's program. I welcome you all in this fourth day of 9-day series of virtual CP meeting on capital market and crypto outlook 2022. So without wasting our time, since we have with us our secretary CIRC Shashikant Chandrakar ji, so I request him to address the August gathering. Thank you, Shashikant ji. Thank you, Devenji. It's my pleasure to have with all the dignitaries in the series of this webinar for global market and crypto currencies, crypto assets. Friends, this is fourth day and I am attending since last 3 days. One day I have missed it. But really, it's a very good initiative taken by CIRC to update and upgrade our members in the field of share market and crypto market, so that they will understand the things better and can guide their clients also, and they should get benefit from the market for their self also. So friends, we have with us today's eminent speaker, AB of Global Market, Sri Bagga sir, and we have with us our newly elected Central Council member and past chairman of CIRC, Sri Abhay Chhajer ji. I welcome him in the program. I also wish a very good afternoon to our chairman, CA Nilesh Gupta ji, and all the members present here, and of course today's program moderator CA Devendra Somani ji. Once again, I would like to thank all of you for organizing this type of very knowledgeable program in the platform of CIRC. And without wasting much of your time, I would like to thank everybody for listening me carefully. Thank you very much. Thank you, Shashikant sir. Now I request our honorable chairman CIRC Nilesh Gupta ji to address. Thank you so much. Thank you so much, sir. Very respected, dynamic, ever energetic, and my chairman in my first term in Regional Council, my dear friends, CA Abhay Chhajer ji, newly elected Central Council member. So मैं चाहूँगा कि I welcome and I congratulate from the entire team of CIRC to Abhay Chhajer ji. Very respected today's learned speaker, AB of stock market, Ajay Bagga ji. My elder brother and secretary, CIRC, Shashikant Chandrakar ji, immediate past chairman, Devendra Somani ji, and other managing committee member of CIRC, and very respected viewers of this 9-day series on capital market and crypto. So friends, we have with us our energetic न्यूली इलेक्टेड अभय छाजेड़ जी. तो मैं आज कुछ ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेते हुए डायरेक्टली हैंडओवर करूंगा अभय छाजेड़ जी को. आए और आप अपना
वर्ड्स फॉर आवर व्यूअर्स एक्सप्रेस करें. थैंक यू सो मच. Thank you, Chairman sir. Now I request our past chairman CIRC Abhay Hajedji, today's chief guest, CCM elect 2022-25, to address his. Over to you, sir. Thank you so much. Respected Chairman of CIRC Nilesh Gupta ji, Secretary Shashikant ji, past Chairman Devin Somani, and moderator, I think, for this program and a series of program which has been organized by Central India Regional Council. Respected learned speaker Shri Ajay Bagga ji. First of all, I wish all the participants, the dignitaries, a very happy new year, 2022, of course, and wish that this year brings prosperity, keeps you good health, because we've seen this the COVID cases increasing each day. So, but everyone should take good care of themselves. So wish each one of you a very happy new year 2022, and congratulate team CIRC, Nilesh, Shashikant ji, Devin ji, and the distinguished managing committee members of CIRC for organizing this series of capital market and crypto assets program 2020 Outlook 2021. So, this is a very good initiative from CIRC for members, I think, and you have, I have seen the list of speakers. So, learned speakers, having in-depth knowledge in terms of capital market, and I'm sure the members participating would really be benefited with their experience and the knowledge, the wisdom they carry, and definitely would really help the participants to take care in the capital market, when to invest, where to invest, how to invest, which is the best time to enter, how to organize their investment in good stock, large caps, mid cap, or other investment opportunities, which the participants, I'm sure, would be able to know with these learned speakers we have each day. So nothing much to say, but I thank each and every participant, the members of Central Region and even outside the Central Region, for attending this very important program, and also electing me in the Central Council for the first time from Central Region, from Bhopal. So this is, of course, would be an opportunity for me to serve our members and profession from Central Region at national level, at the Central Council level. And I assure you that whatever best professional competence I carry with me, I would certainly ensure that we take the ICI, the profession, to a newer height, to enhance the image of our ICI and our profession, which is very important. And any such opportunity which the members have been missing out so far as, I would say, smaller cities, medium cities, where they were difficult to interact even with the Central Council members, or raise their issues or concern, I would be available. Any such issues, matters which is to be taken to the council, to any authority at council level, I would be happy to serve members at any point of time. So thank you very much, team CIRC, for giving me this opportunity, inviting me, and I'm sure members would be eagerly waiting to listen to Baggaji with his experience. And I would certainly be meeting regularly and would be interacting. And of course, any such issues, members are most welcome to give me a call directly or send any such issues which they want me to represent to ICI. Thank you so much once again for giving me this opportunity. Thank you, Abhay Hajedji sir. Definitely, we are very hopeful under your able leadership. Our council will achieve the new heights. Our institute will achieve new heights, and
our members will always carry love and affection for you, and that's why you are here. And this is the result of all this love and affection. Okay. Now I request Naman Gupta ji to brief about our today's learned speaker. Though our learned speaker need no introduction, as he is the AB of global market and regularly appearing on G Business. Today also he has at 11:30 he has a program of AB of global. So, but for formal introduction, I request Namanji. Over to you, Namanji. Thank you, sir. Thank you so much for the kind opportunity, for this great opportunity. I welcome Bagga sir, AB of global market basically. So Bagga ji is a veteran of Indian financial service industry with over 31 years experience in banking, fund management, structure finance. Starting at Citibank in 1990, he has had senior roles at global market leaders like Citigroup, Pioneer Funds, General Electric, Fullerton Funds of Damask, and Deutsche Bank. He was the youngest CEO of the mutual fund industry at the age of just 36, heading Kotak Mahindra Asset Management and Lotus India Asset Management. He was the country head and MD of the Deutsche Bank's private wealth management division and served on its Asia Pacific Executive Committee. He is a private investor in both the public and private space and serves on the board of many companies. Mr. Bagga was the chairman of Financial Planning Standard Board of India, which awards the Global Certified Financial Planner certification. He has regularly served on various financial industry committees and think tanks. He's a regular contributor to electronic and print media with more than 5,000 TV appearances and 100 articles. He stars in the monthly program AB of Global Market on Z Business. For the last 22 years, he has been associated as a trustee with the Art of Living Foundation. Mr. Bagga is a PGDM equivalent to MBA from the very reputed institute XLRI, Jamshedpur, and holds a first class honor degree in political science from the prestige Hindu College, Delhi University. This is the formal introduction of Bagga sir. That's why he needs no introduction in the market, in the capital market also, obviously. Thank you, Namanji. And now I request Ajay Bagga sir to start with the English. Thank you very much, Devendraji. Namanji, thanks for the introduction. Abhayji, heartiest congratulations on your new role at the Central Council and wish you all the very best. Thank you for the very warm welcome. Shashikantji, thank you very much for your warm welcome. Devendraji, we go back now. In this COVID time, we have had the chance to meet a number of times, and thank you very much for inviting me again to your very prestigious conference. It is my privilege to be speaking again to your members. So today, I thought I will talk more macro to give you an idea. You know, आजकल वैसे भी डर लगता है कुछ भी forecast करने में, because last 2 years we have been wrong. So 2019, none of us imagined कि already the virus has come in China in November और इतना घातक virus निकल आएगा. None of us had that idea. And same in 2020, we thought that finally with the vaccine having come in November of 2020, that 2021 should be uneventful. We never expected the kind of second wave that came in India and globally, and all the other problems that we faced. So very difficult to be a forecaster in this kind of a scenario. So pinch of salt ke saath lijiye, whatever I'm saying today. We have been wrong consistently, but we give probabilities. Your profession of accounting is at least of numbers. There is some interpretation, yes, definitely, but it is boils down to very hard numbers. Ours, we have to really look into the crystal ball and think what will be the earnings, what will be the economy like, what will impact, and a complex subject like the stock market. In the stock market, our problem is
it is as complex as forecasting the weather without having the tools of the weather forecasters. Now the kind of computing power that they have. In finance, we have got the computing power, but that usually is going wrong, as we saw in 2008 at the global financial crisis, when most of the models stopped working. And same thing happened in the COVID in March 2020, when the markets fell. We saw the models again failing. So it is a science and an art. It is starting off, though it is 300-400 years old, but still it is in its infancy. Linked to accountancy, because you are the bedrock, you are the fundamentals. Unless you do the proper balance sheet and cash flow and P&L, we cannot do our analysis. So you are the starting point for the success of the markets. That is something I wanted to start with, to thank all of you from the CA profession. Where are we right now? We have seen very good performance in the markets. Indian markets have been up consistently for 6 years now in a row. Nifty has given positive returns. US markets have given 3 years positive returns, which has happened first time after 1999. After 96 to 99, पहली बारी ऐसे हो रहा है in the last 20 years कि 3 years in a row US market has given positive returns. So we are coming off a very strong bull market. Economies have recovered largely. This year, the global economy will cross $100 trillion in GDP. So global economy has recovered to its 2019 levels already, crossed it. And now in terms of trajectory, where if the COVID had not come, where we would have been, that will get covered in the next 1 year. So we will have caught up to the old trajectory where we should have been in 2022. So remarkable recovery. Households, if you look at, I'll give you just one data point. American consumers, who are the biggest, you can say, consumers in the world, nearly about $15 trillion a year of consumption happens by the American consumer. That cohort, that collection of people has seen its net worth go up 22% from March 2020 to December 2021. This 22%, in the great financial crisis of 2008, it took 7 years to reach this level. That I'm just giving you this one statistics to tell you कि लोगों की जेब में पैसे भी बचे हैं. One class of people have, whoever was an asset owner, whoever had real estate, whoever had stocks, whoever had bonds, mutual funds, whoever was an investor and was owning an asset has done very well, because all asset classes have got appreciated. Gold has not performed last 1 year, but again, start of the pandemic से देखें तो gold ने भी कुछ returns तो दिए हैं, चाहे वो last 15 महीने में हमें returns नहीं दिए gold ने. But overall, the world is much wealthier. The world has much more money in its pocket. There are some segments, poverty has increased globally. In some countries, poorer people have become poorer. Some segments of people who lost their jobs and the more migrant kind of labor, they are worse off. But as a whole, if you look at economies, recovery has been sharp, recovery has been fast. It is a K-shaped recovery. Though we say it is a V-shape, के नीचे भी तेजी से गया, ऊपर भी तेजी से बढ़ा, but more it is that in the non-high contact, non-intensive, non-face-to-face industries, there has been a sharp V-shape, but some industries went down and have stayed down. So that is the other leg of the K. Those are like tourism, like travel, like airlines. You have seen international travel. अभी भी नहीं शुरू हुआ है. India में भी only the bubble flights are coming. International flights are not free to come. Tourism is virtually gone.
now some domestic tourism was starting और उसमें Omicron आ गया फिर से. So you're seeing the case of the cruise ship of the coast of Bombay, where 2,000 passengers, tourists are stranded. 60 have tested positive, so sabka test ho raha hai. So cases like that, cinema halls. Just now, cinemas were opening. 83 film was released, and we see now all over the country cinema halls are being shut down. So travel, tourism, cinema halls, hotels, restaurants, other eating joints, all high contact industries, we are seeing that they have suffered in this scenario. So K-shaped recovery. How are the countries doing? Countries, basically, they spent a lot from their accounts. So, fiscal deficits were raised and fiscal stimulus was brought in along with monetary stimulus by central banks. So roughly about $15 trillion of fiscal stimulus globally, $12 trillion of monetary stimulus were done. So total global economy of 90 trillion में roughly $27 trillion डाल दिए गए last 2 सालों में. That is the level of stimulus that has helped these economies recover so fast. That is the level of stimulus which has helped us nominally to be looking at $100 trillion in 2022. इतना पैसा डाला गया है. अब उसकी कीमत क्या है? कीमत तो चुकानी पड़ेगी. Now there are as many as 45 countries globally where their debt is more than GDP, and there are 25 such countries where the total debt level in the countries is 300% of GDP. Starting with US and China, total debt is government, corporations, and individuals, all put together. So US and China, the first and the second biggest economies you add, and 25 other countries have debt to GDP ratio, total debt to GDP of 300%. So unsustainable ho gaya hai. India also, if you see, we are not that high, but nearly 5 lakh crores is our interest outgo every year. What the government of India from its budget, the central budget, every year we have to pay 5 lakh just as interest on the past borrowings that we are carrying forward. So ye debt ek aa raha hai har country ke liye, and it's a burden on the coming generations because someone will have to pay this price, or it will restrict the budget availability, the fiscal space availability. Aage jaake countries will not have the ability to stimulate so much because they have spent so much money. Same way, central banks, if you look, central banks today, the balance sheets are huge. The Fed in the US, their balance sheet has expanded from about $1 trillion in 2000 to 2008, they went up to $4 trillion. And today they have risen to $9 trillion. $9 trillion. Ye basically note chape gaye hain. You have just printed the notes and the government debt. That is what has happened. So 37% of Fed's balance sheet is 37% of US GDP. Japan देखें जहां 1990 से ये चल रहा है monetization of government expenditure, government debt. Japan is at 150%, and Europe, which used to be very careful because of the German leadership, Germany was very afraid of the 1920s kind of hyperinflation coming back. Germany used to really lead a very conservative European Central Bank. All that has got thrown out, and today the balance sheet of ECB to the GDP of European Union is 81%. So काफी वो unsustainable levels पे both the government and the central bank balance sheets with the expansion, with the deficit financing,
with fiscal stimulus, monetary stimulus. Because of that, we are reaching very unsustainable levels. Populations dekhe, to 51 countries in the world are now seeing declining working age populations. इतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे जो working age में आ सकें फिर आगे चल के. Working age is contracting, including in China. And इससे क्या होता है, when the population start declining, the country's economies start declining, consumption amounts go down, that many lesser workers are supporting that many more people. And this has become such a big issue in China that they gave up their one-child policy and they said they are now giving positive benefits to anybody who has 3 children. They are giving them subsidies. But that cycle has started where people don't want to bring children into this world. People are not getting married. People are staying single for longer. This is already there in 51 countries, from Japan to Korea to Russia to large portions of Europe, where populations are on a decline. Even in India, we have reached a balance now, though we still have a very young population. Next 30, 40 years, we won't have a problem. But our overall population will stop expanding going ahead because our birth rate has come near to the death rate. So that many Indians will be born as die every year usually. And you will not see the overall population expanding, which is good for the country. But it will become an aging population in another 30 years' time when we will have the issues that Japan, China, Russia of today are facing. We'll need either immigration or the population to increase. So wo bhi time aayega where Indian government will tell people to have more children and give subsidies for that. Another maybe 20 years from now, we'll see that day also. Asset bubbles in every asset class. Just to give you a very macro picture, you all analyze balance sheets of companies. We analyze balance sheets of countries and the globe. If you look at today, the financial assets in the world have become 4 times the size of the global GDP. 4 times. That is the kind of expansion, monetary expansion that has happened. And that is the bubble that we are all sitting on. Itna massive expansion hai aur ye historic hai. Kabhi दुनिया की history में कभी नहीं हुआ इतना बड़ा amount at such a scale. So there is virtually no place to hide where you can say, okay, I will own this and not participate in the bubble. Everything is largely in a bubble, except again, as I said, gold, silver, palladium, these have not participated for the last 2 years. But otherwise, mostly assets are in a very bubble zone. Some of the assets which were running very hard in the last 2 years have seen corrections. 4 really stand up to mind. One is cryptocurrency, which is part of this seminar, which is basically a software written and which is masquerading as a currency, as an asset class, as a store of value, as an exchange of value. But किसी को पता नहीं अंदर क्या है उसके. And वो $2 trillion cross हो गया. At one point last year, there were $3 trillion in 10,000 cryptocurrencies globally. Blockchain, distributed ledgers, DeFi, all these are good. All these are welcome technology advancements. Crypto, we don't know. And governments also are puzzled. Leave aside all of us. I'm sure you as practitioners, your clients will be coming. What is the GST? What is the taxation? How will it be taxed? Will it be speculative income? Will it be business income? Will it be investment income? How should I take it? All those are still up in the air. We don't know. Subhash Garg committee in 2019 was very strict. They said just ban everything and have 10 years imprisonment
if after the ban also someone continues to hold it, and crores of fines. So globally, if you see crypto, there is El Salvador, very small country. You can say one suburb of Bombay or Delhi. That's the kind of size it has. It has made crypto Bitcoin as its legal tender. So that goes as a currency, and हर एक आदमी औरत सिटीजन के नाम का उन्होंने वॉलेट खोल दिया और उस वॉलेट में कुछ पैसे डाल दिए हैं क्रिप्टो करेंसी के ताकि चालू हो सके काम. And crypto is accepted across the country. It's a very small country. On the other side, we have China, which has totally banned. First, they banned mining. Then they said trading. Then they said in any form, no one can hold crypto. No one can deal in crypto. No one can exchange. And if they are holding, we will criminally prosecute you. So one side is El Salvador, which is all open. On the other side is China. In the middle is the most of the world, where they are trying to regulate, but regulators don't understand it. अभी आपने देखा GST raids हुए on the coin exchanges because they were issuing their own tokens, and based on those, buying those tokens, people could do XYZ activities. So department said this is service and you have to pay tax on it. They paid 50 crores, 100 crores of tax was collected. But that is the kind of risk our clients also run because there is no written law. It will be on the interpretation of the department. We are hoping that with the budget, there will be some clarity and it will be put in that what is the incidence of tax, what is the treatment of tax for these currencies, what is the reporting, or you ban it. Right now, neither the ban is happening, nor clarity is there. So it is a time of flux. I'm sure clients have asked you this. Best to pay as much tax as possible as speculative income and be safe, then we can see later. And mostly it will come as retrospective because currencies have been there for 1-2 years in India. Millions of Indians have invested thousands of crores in it. So I don't know how that income, now we will go ahead and put it. So that's the first part of the bubble crypto. Second is technology companies, what we call profitless prosperity. They have a lot of investment by private equity people. In India itself, more than 40 unicorns were created. Unicorn is $1 billion plus market cap. Revenue देखने जाएंगे तो बहुत कम है. And profit तो पूछे मत क्योंकि it's all in the red ink only. So profitless prosperity. PE guys put in $39 billion into this startup ecosystem in India this year. The trend we are seeing, there is a lot of money globally chasing these kind of assets. These PE guys only throw the ball amongst each other and keep on hiking the valuation because there is no external fundamental basis to value. There is no cash flow as such. There is no profit earning kar sake. There is the book is not possible to be calculated because you have eroded the net worth continuously. And what is now lying is the latest share premium that is lying there. That's about it. So they are asking valuation on price to sales. Price to sales chalta hai in FMCG companies, consumer companies. We have used price to sales earlier, but first time we are seeing even in financial companies. A financial company आप देखिए UPI वगैरह बोलते हैं 30 times, 40 times, 100 times India's GDP they move in a year because that much velocity is there. People keep exchanging money amongst each other, and people will say, oh, I have moved this much money, that much money. अब आपके remittance आते हैं 60-70 billion dollars of remittances come into India every year. Then those remittances get credited by the banks.
If the banks start showing that as their turnover and asking for 50 times that turnover, imagine what all our banks would get rated at. So we joke a lot that if ITC was a startup today, each of its divisions, if it could get a startup valuations, all the problems we are facing for so many years of ITC not performing would be over. You look at SBI, for example, just its home finance book or the YONO app of SBI, when Rajneesh Kumar ji was the chairman, he used to say, this is at least 20,000 crores worth if I take out the YONO app. And actually, YONO app has a lot of banking in it. If SBI just subsidized it, sent out the YONO app and listed it separately, it would get a huge premium because there are actual customers, actual transactions happening on that app. I was seeing one fundraise by one fintech recently. 3 fundraisers done in 1.5 years, and very proudly, I respect that person, the owner. They said, Series A तो हमने आधा ही यूज किया है, Series B तो यूज ही नहीं किया, वो सब पड़ा हुआ है, अब Series C कर रहे हैं. So I asked, why are you doing Series C? आपने B भी क्यों किया? You are diluting yourself. The fintech owner was down to 40%. I said, every time you have diluted yourself out. If you didn't need the money, why did you take it? He said, Bagga sahab, abhi paisa mil raha hai na. Paisa mil raha hai, agle saal nahi milega to kya karenge? And the same PE has given 1, 2, 3 ABC series and taken it to $800 million valuation. If you see the balance sheet, revenue is 11 crores. Loss is unknown. To publish nahi hai, loss itna hai. And this is a good conservative promoter. He has kept the money safe at least, very cash rich. But where is the value? We don't know. So profitless prosperity, these technology companies without actually having any cash flows, without actually having any profits, just like 99.com time, we used to meet companies and we would ask them, so what is your metrics? They would say, you old world guys, you don't understand. Cash flow vagara kuch nahi hota. Cash burn is what matters. How soon can I use that cash up? वो अभी cash burn कोई नहीं बोलता because 99-2000 के lessons सबको याद है and what happened to the markets. Now it is more, what is my total addressable market? What will be my market share? Actual sell-side brokerages have taken out reports of 2040, 2050. Kal I was surprised, Tata Motors की 2050 की report निकाली किसी ने. हमें तो 3 quarter का नहीं पता क्या होगा. I don't know how people are taking out 2040, 2050 reports, and someone wrote a blog also. कि why I did a 2040. 2040 तो हरियाली है, फिर आप जो लिखना है लिख दो. It is like saying India will be the #1 country in the world. This country will be the greatest. This company will be also the greatest. कुछ भी लिख दो फिर. Why I am bringing all this up? कि these are parts of the market which are in froth. This segment had become as big. Goldman Sachs का एक index है इसके लिए of these non-profitable technology companies listed on the US stock exchanges, on NASDAQ and NYSE. Mostly they are NASDAQ. That index had become $2 trillion beginning of last year. Itna बढ़ गया था, and that index is down 50% now. So $1 trillion का paper wealth लोगों का गया है. अब 1 trillion PE का नहीं गया है because PE ने डाले होंगे 300 बिलियन या कुछ, और खींच के वो उधर ले गए होंगे. जैसे WeWork का था, WeWork was losing money continuously. In 5 years, they lost $12 billion. The same PE guys gave a valuation of 11 billion, then a few months later, 13 billion, then 18 billion.
And then they said we are going to IPO at $48 billion. ये 2 साल पहले था. कोई profitability नहीं. You don't own anything. You just rent properties and you give it to people to come and work in them. So you have rental flows and you are making loss on that. 48 billion decide kar liya. Luckily, it didn't go through at that time. Issues with the CEO, all those things happened. Now they did through the third bubble I'll talk about, SPAC. So SPACs are what? These are just shell companies. You just list a company, you raise money. On my name, I go in and say, Ajay Bagga and Nipun Mehta have come together. We have this track record between us of 70 years. Give us money. When we find something to invest in, we will invest at that time. Right now, I'm giving you shares at 10 rupees. So these SPACs became huge. Nearly about $100 billion were raised in SPACs last year. That index is down 32%. So what would happen? You don't go through all the rigor, all the compliances of an IPO. You just go and merge with a SPAC. So we were merged with a SPAC, $17 billion valuation pay. They were asking for 48 billion, 17 after 2 years. And wo bhi now they are having to restate the earnings. Once they came into the public gaze, they said, oh, this SPAC has to restate. It's basically all its accounts have to be restated. So SPACs was the third big one. And fourth, which is an emerging one, which is good in one way, it is the ESG. So environmental sustainability and the green part, all the climate related, ESG has become a very big factor also in investing. Billions of dollars have been raised globally for this. Most of it is going towards very laudable projects, very good projects. But aaj jaise Chinese market was down. What happened? China was giving subsidies to its electric vehicle manufacturers. They said in 2023, I will no longer give subsidies. 10% those stocks started correcting today. If you see the history of the EV market, electric vehicle market, the biggest players also, they all lived off these subsidies and by selling carbon credits, that we are saving this much carbon. You know, one human being in your lifetime, you would, generate X amount of carbon footprint. These cars, when they are made, are about 3 times that carbon footprint. But the good thing is in their running, they save a lot of the fossil fuel and it is very visible. कि वो धुआं नहीं आ रहा, smell नहीं आ रही petrol की या diesel की. That way it seems something very attractive. So people are welcoming them. That is the fourth bubble in the thing. And related to it is the commodities. Now, copper, if you see in one Tesla car, nearly 150 pounds of copper is there. 150 pounds. Aluminium ho, copper ho, there is so much scarcity. And then the smaller rare earths, lithium, इनका तो recycling भी नहीं है. Copper, at least a lot of scrap is recycled. Aluminium is recycled. Lithium and all, we are just getting those supply chains ready. कि battery जब खराब होती है, हम तो कबाड़ी ले जाता है या even the dealer only keeps it. I don't know where the battery goes. The car battery, when it goes, you just send it to the garage and a new battery is put, you pay for it. I have never figured out where it goes, how it gets recycled. That is still lead. Now lithium, like your phones, like all your gadgetry, very little is available. China has a lot of control of it, nickel, cadmium, and the supply chains will take till 2035 to come. So very interesting.
causing commodity super cycles to come in because of a climate change issue that you have. So you see the whole value analysis. कहीं से शुरू होते हैं, कहीं पे आ जाते हैं. The good thing that we have seen is that all these four bubbles are down more than 35%. Historically, in a bubble, if the asset prices fall more than 35%, then it's difficult for that asset class to recover. Historically, we have seen that. That means कि ये नीचे जाता रहा. However, what is happening today, what has changed today is the amount of money that is changing, that is chasing all these bubbles. So इतनी आसानी से जाएगा नहीं. आप देखिए Bitcoin, हम सोचते हैं Bitcoin सबसे better performing asset class है. Bitcoin का जो peak आया, वहां से Bitcoin is down about 33-34%. And just today I was seeing one report came on my desk just about 2 hours before this session. 125 US stocks gave higher return than Bitcoin. 125 out of S&P 500. 125 stocks of the S&P 500 gave higher return than Bitcoin last year. I was very surprised. I didn't expect that kind of a thing. उसमें क्या है, emerging energy के stocks हैं, petroleum producers के stocks हैं. इतना बड़ा company like Philip, like Exxon, like other Dominion Energy, इस तरह की कंपनियां. Materials, semiconductor companies, Nvidia हो गया, AMD हो गया, semiconductor companies, and Tesla was sitting at 48 out of 50. I thought Tesla would be the top performing stock because you have seen $100 billion say 1 trillion, it crashed through in 2 years. So I thought even last year it must have been the top. But guess which is the top performing auto stock last year? Ford. Ford went up more than 100%. उनका भी electric truck निकल के आ रहा है. So very interesting. I'm just sharing some snippets with you. The markets are not exactly what you look at. A lot of markets you have to see under the hood. ऊपर से खोल के सामने bonnet हटा के engine देखना पड़ता है. नीचे fundamentals देखने पड़ते हैं, and it all comes back to you in the accounts. Follow the money and you will understand the company. Very simple. Bubbles के time क्या होता है? Cash flows are just left aside. अब the most venerated, investors in the world, Warren Buffett, Charlie Munger, Berkshire Hathaway. Charlie का birthday था 2 दिन पहले. He turned 98. Warren is 91, 92 now. They are sitting on $141 billion of cash. $141 billion. सोचिए. Such a huge amount of cash. And आजकल क्या होता है, any new analyst, anybody on the street who's not earned few lakh rupees also in their lives, they come and say that these guys have lost their touch. अब इनका कुछ नहीं हो सकता. It's all over. They are waiting for the opportunity, whether in their lifetime or their successors do it, but that opportunity will come in the next 2 years, 3 years. Where that opportunity will come from? One, what I call the Abhimanyu effect. Okay, central banks को, especially after 2008, global financial crisis में इतना बड़ा stimulus पहली बारी डाला गया world economy में. They couldn't take it out. 2013, when Nanke tried it, it was a huge taper tantrum. He gave up. In 2019, they started talking about it, gave up. और उसके बाद COVID आ गया तो they just put in more. कि ये चलता है. जब economy गिरती है तो पैसा डालना चलता है. अभी इसमें पैसा डालो, बाद में सोचेंगे. No one knows like Abhimanyu. They have gone into the Chakravyuh. Nobody knows how to get out of it. Ben Bernanke की जो PhD thesis थी 1929 पे, he said that because the central banks removed the stimulus too soon, वो
ग्रेट डिप्रेशन इतना भयंकर हो गया. अगर वो डालते रहते स्टिमुलस, it wouldn't have been so bad. At that time, they pulled back. Banks were going bankrupt. The central bank didn't do anything. They raised rates rather, and it became a global Great Depression. 200 साल का बड़ा depression हो गया. This time they got it right. The Bank of Sweden, the Sveriges Riksbank कहते हैं उसको, the Central Bank of Sweden, they tried in 2010. For 1 year, they tried tightening, but economy started stalling. वो घबरा के they just left it again. So where we are right now, पहले accelerator को बिल्कुल दबाया हुआ था नीचे. Full, we were giving the fuel to the economies with the foot on the accelerator. That foot is slowly being removed. Taper हो रहा है. But brake लगानी किसी ने शुरू नहीं की. ब्रेक नहीं शुरू हुई, और ब्रेक लगानी आती भी नहीं है. स्पीड इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, मोमेंटम इतना है कि बहुत डेलिकेटली उसको बैलेंस करना है कि अपने वेट से ही वो धीरे 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 करके रुक जाए. मैं ब्रेक से हाथ उठा देता हूँ, होपफुली पैर हटा देता हूँ, होपफुली वो अपने मोमेंटम से रुकेगा. सो दैट इज व्हाट सेंट्रल बैंक्स आर थिंकिंग, एंड दैट इज द बिगेस्ट रिस्क इफ यू आस्क मी ओवर द नेक्स्ट 2 years. Inflation is causing central banks to tighten. Will central banks tighten too fast, too soon, which will lead to another recession? Will they let it go for too long, which will lead to hyperinflation? फिर उसको रोकने में emergency brake पूरा लगाना पड़ेगा, या बैरियर में जाके मारनी पड़ेगी गाड़ी रोकने के लिए. That is the biggest risk today that we are facing. So where are we starting 2022? Great markets, great asset bubble, lot of money in a lot of people's hands. China probably has peaked. China is slowing down. That is there very much. China, the government is doing self goals. They are trying to control their corporate sector and bring it back into the state sector. So even if that means short-term pain, they are ready to take it. $2 trillion of Chinese technology shares market cap eroded in the last 1 year. Now they are doing the same to their property sector. They are doing that to their electric vehicle sector, education, edutech sector, health tech sector, you name it. And the government and the party is overreaching and trying to control all the entrepreneurs and the enterprises. To what end, we don't understand. But China, remember, was 30% of global GDP growth used to come from China, 33% at the peak. It is down to 25%. It will keep going down now. So probably we have seen peak China. China ka peak ho gaya hai. Nominal way mein, it will keep increasing the GDP, but the influence of China, the linkage of China globally is reducing. In commodities, still they control it. Consumer goods, they control it. Manufacturing, they control it. People are trying this China plus one strategy, of which India is a beneficiary also. Most people will try that. Most countries will try that. And going ahead, what will emerge is a US versus China kind of a world, where each of the countries will have to take one of the sides. India was lucky when it was US versus USSR. We had the non-aligned movement. Now the non-aligned movement does not exist. We'll have to choose. For us, the choice is very clear, given the kind of behavior of China. But having said that, our economic linkage with China is still very strong. So this will be the big civilization battle, democracy versus autocracy, China and its satellites versus an unreliable US, a declining Europe, a declining UK, and a few democracies like India who are not strong enough on their own to take a China. We can defend ourselves definitely, but to take on China needs a much bigger superpower level, which only a US can do, but US might not have that
kind of a appetite. The domestic US opinion might not want to do it, as we saw in Afghanistan, where nearly 15 years of gains were just given away overnight on a platter, and they went back 15 years or 20 years rather, if you take it from 2001 onwards. That is what's happening to the world. Other geopolitical risk is Russia, Ukraine. I'm hoping nothing will happen. We'll know in the next 15-20 days, because baraf abhi jami hui hai, the tanks can move now only. By Feb end, the ice will start melting. Then it will go back to the next year. So hopefully US can avoid this. Otherwise, it will lead to a much bigger crisis. Not as a hot war. Russia will easily win over Ukraine. Doesn't have that armed force to really stay for very long. It will be costly. But the sanctions that will come and the geopolitical risk that it will entail, and the risk of a misadventure with nuclear powers there, anything going wrong, that risk goes up, which markets don't like. So China, Taiwan, China, India, China and the rest of the world, Russia, Ukraine, these are flashpoints. Iran wagera hai, but Iran is more or less contained. It is understood risk, so markets don't move too much on that. As far as commodity prices go, 2021 was great. The commodity ETFs gave 40-50% kind of return, especially oil really gave a huge return last year. Where do we see oil? Best case scenario, it will be flattish. Worst case, it will go to $117, $120. The Iranian oil is not coming back. Iran-US agreement doesn't look like it will fructify. And Biden is also not so keen on playing much of a role in the Middle East. They have left it to China largely. Iran is backed by Russia and China, so we don't expect that supply to officially come into the market. Libya supply is going down. Venezuela is constrained. So new supply only the Saudis and Iraqis can bring in. Russia also is today producing less than what is its quota. तो वो दिखा रहा है कि रशिया के पास सप्लाई नहीं है. Outside OPEC, there is Norway है, Canada है, US है. They can increase and they will increase next year. And now this year, 2022, but not enough. Agri commodities are facing the climate change. Drought hai, unexpected rainfall hai. We saw coffee crop in Brazil getting spoiled by frost and then drought. Nearly 25% less coffee produced and coffee prices doubled last year. We are expecting that to continue. La Nina effect hai Brazil mein, which means rains will not be that copious. And that is bad news for coffee, for sugar, for soybean prices, because Brazil might not produce that much. So agri commodities going up again. Within metals, iron ore and steel should be flattish because China is not growing as fast, and that's the biggest producer and biggest consumer. China has reduced its steel production by 25% from August onwards, and its property sector used to consume nearly 14% of global steel was consumed by China's property sector. वो नहीं consume होगा. Property offtake has fallen nearly 38% year on year in China. So that will have an impact. Copper, aluminium, nickel, tin, these will continue to do well. That's less supply and more demand is there. Currencies, we expect US dollar to do better, to be stronger, but at some point, it will hurt the US economy, and you will see that behind the curtain, there will be undeclared currency wars where US will start leaning on Japan, ECB to do some action to make the dollar less strong. So we don't expect a one-way street on dollar. That happened in 2020. Everyone said that dollar is ending. Itna debt aa gaya, dollar will really go down. Stephen Roach also wrote a big article. And guess what happened? The dollar strengthened. So this year, everybody's long on dollar. Everybody's saying stronger dollar.
I think somewhere the market will surprise us again. But first quarter dollar is looking stronger. Dollar goes strong, emerging markets start seeing outflows, as we have been seeing in India also. Nearly 100,000 crores went off in FIIs from secondary markets. Uske samne primary markets mein they did invest about 75,000, 80,000 crores in primary markets in IPOs. So not that much money went off on a net basis. Add to that the $39 billion. So, roughly about ले लीजिए 3 लाख करोड़. तो 1 लाख करोड़ निकला भी FI secondary market, 3 लाख करोड़ startup funding के रूप में आ गया. So that's why, it didn't impact our rupee. Rupee, I don't see going much more than 76, unless China devalues its currency to destroy other emerging market countries, because all of us will have to devalue if China devalues, because you're competing on exports with them. If Chinese yuan goes down, then rupee will also have to go down to keep up with it. Otherwise, we don't see more than 76, and RBI will not let it appreciate more than 74. That is the band you can take in rupee for all your hedging purposes. That's what we see. Coming home, budget-wise, we expect the government to have expansionary budgets next 2 years. They will have a view on the UP election to ab ho hi gaya. Nothing much can be done now. Whatever policies were there are there. And now more announcements only will come. But seeing the 2024 election, we are expecting expansionary budget. Again, that will have to be funded, and the funding will come from the middle class and upper HNI classes. So not expecting much of rate cuts. Corporates have already got it. Hopefully, giving the level playing field to various legal entities like LLPs and all that. Hopefully that will come. No expectation on capital markets, long-term capital gains tax or STT or anything going away, or dividend distribution going away. They won't have the fiscal space itself, even though revenues have been quite strong and expenditure has been curtailed. But given that next 2 years, government will try to spend into all the voting pockets. So in the rural areas, affordable housing, roads, infrastructure. The focus will be to reach money into the pockets of the voting population and set up for 2024. That is what you can expect. Markets-wise, this year, expecting positive market as against FY 2022, 34% corporate earnings growth. We are expecting FY 2023 to come down from 34% to 16%. It's more a function of the base effect of, when post-COVID, the earnings fell very dramatically. So what 34% was catching up for both. 16% FY 2023, 13% FY 2024. With a pinch of salt or sack of salt, 2-3 साल का दे रहा हूँ, it's meaningless because budget ही change कर देगा सब कुछ. We don't know what will come in the budget. IPO market hot रहेगा. 2 लाख करोड़ का IPO अगले साल दिख रहा है. 1 लाख तो LIC ही है. So LIC IPO itself of 1 lakh crores will give a big boost. Sectors that we like, banking first of all. It has underperformed for 2 years. NPA issues have been largely resolved. Banks have got a lot of money sitting on their balance sheets. They are able to lend, which they have not lent so far. The capex cycle will revive. Private capex comes about 4 to 6 quarters after government capex, and government capex has been very strong in the last 3 years. We are expecting this year private capex to take off. IT will do very well. IT is like a Y2K moment, like 2000. उस तरह का काम मिल रहा है IT को. डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, क्लाउड, ये आर्टिफिशियल, AR, VR, मेटावर्स, डिजिटाइजेशन, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ये सब काम IT कंपनियों को मिल रहे हैं. तो नेक्स्ट 3-4 इयर्स का रनवे इनका बहुत स्ट्रांग है. दूसरा, दे आर कैश जनरेटर्स. दे जनरेट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश.
they can keep doing share buybacks. अब देखिए Apple crossed $3 trillion yesterday trading, and huge amounts they are just putting into share buybacks every year. Every year they are doing billions of dollars of share buybacks. And look where the company has gone. So our IT companies, though they are service companies, Apple is still largely a product company, but it has huge service revenues also coming. But our companies will do well in IT. Industrials rival है तो industrials जो भी हैं आपके construction हो गया, capex हो गया, engineering goods companies हो गई, ये सब अच्छा करेंगे जो भी बनाते हैं आपका infrastructure. Cement will do well, real estate, affordable housing, government का है. Auto will turn around this year. It's seen a bad 2 years, and especially in commercial vehicles, though the cycle is long now. We are hoping for the cycle to turn around with the amount the government is putting in the infra, but formalization or financialization. So the chote truck operator and those will get wiped out. These will be mega companies which will come up and run the logistics in all your corridors, golden quadrilaterals is some. Last mile में छोटे रह जाएंगे for the last mile connectivity, but it will be largely large fleet logistics companies that will come in and bring a lot of formalization. All suppliers into real estate, they will do well. Then you can look at auto, I mentioned already. Rural demand has been lagging, and we are hoping with the budget, government will recognize this and put in more funds, and that will lead to tractors and two-wheelers again recovering next year. That is the expectation. New age companies, you're seeing a lot of them are 30-40% down from very inflated valuations or जाएंगे नीचे. Hold करना है, yes. Some of them will be the new Amazons, new Tesla, new Apples will come out of air. Every bubble when it crashes, some few very big ones come out. So like 99, 2000, similar will happen. Oh, time hai abhi. Dalna hai to chota amount we can put. Nothing that will keep you awake at night. 1% of your portfolio you take out and put across these companies. Chalega to 100x hoga, 10 saalon mein, it will take care of you. Nahi hoga to 1% gaya, 2% gaya. No big deal. That's how we should view it. Right now, no sane way to really value these in our, to create a valuation for them. We don't have a cash flow based way. So overall, positive on the markets for a year more, positive on these sectors, which I mentioned. Telecom should also see turnaround. Telecom finally turning around. Pricing power will come even more stronger. Retail will do well. Media will do well. Consumption not looking so good and mostly priced in and very highly priced. So we would avoid FMCG. Consumer durables again avoidable for now, but few companies will benefit from the China +1 PLI kind of things. वो सब ध्यान रखना है. जो भी PLI का beneficiary है, we should look at those and invest in those. So with that, I'll end the formal talk and we'll open it to questions, Devendra ji. Thank you very much, Ajay sir. You have enlightened us by your knowledge. आपका जो ज्ञान का भंडार है वो पता नहीं आपको इतना समय कैसे मिलता है कि आप हिंदुस्तान, यूक्रेन, रशिया, यूएस सारी इकोनॉमी को एक साथ देख लेते हैं और आपके इसे 1-1.25 घंटे के डेलिब्रेशन में यू समझ लीजिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूरा वर्ल्ड टूर करके आ गया. तो जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, it was really excellent. Now I request viewers, if you have any queries, questions, you can raise. We have 2-3 queries. One of Mr. Ghanshyam Joshi ji. How you manage to read so much about global market? How many hours you invest in reading daily? Please also guide about the source from where you study and read the content.
So ये cumulative है and बचपन से ही है कि library में ही बैठे रहते थे. So cumulative है. Knowledge also compounds. Like, you know, all of you, if I show you a balance sheet or a P&L, you will immediately catch कि ये गड़बड़ है. So over time, with little effort, now you can add. But I read for about 4-5 hours a day easily. I think if I've not counted actually, maybe it is much more because पूरा दिन ही वही होता है. So I think rebirth भी यही होगा कि सोते हैं तो फोन देख के सोते हैं, पहली चीज उठते हैं तो फोन देखते हैं. तो अगला जन्म भी लगता है फोन ही बन के आएंगे. पहले वो बोलते थे ब्लैकबेरी बनेंगे, अभी आईफोन आ गया तो आईफोन बन के आएंगे. One more question. I appreciate your knowledge and your ability, sir. I watch on you on G Business even today also. My question is, how do you see Indian market performing in 2020-22 being sector specific? अच्छा है, market will do well. As I said, earnings growth is 16%. तो 12 से 15% आप सोच के चलिए, market should return easily. Very stock specific market रहेगा. So index level not so much. And अगर आप देखें भी ना NSE 500 में nearly 300 plus companies are there which are already 30% from their all-time highs. So correction आया है हमारे market में. That's why it's not that expensive a market. दूसरा है earnings growth है. तीसरा government का जो policies है, China +1 हो गया, PLI हो गया, और ये expansionary budget आएगा, that will give a fillip. And उसमें क्या है, banks तो they have to fund everything. So banks will go with the economy. That's why we like banks the most. Along with that, as I mentioned, industrial, cement, real estate, auto, ये हो गया domestic cyclicals, और international flavor के लिए IT. So technology companies. These are the sectors. आप ही के रिप्लाई से सर एक क्वेरी वापस ले रहा हूँ. आपने कहा बैंकिंग सेक्टर, वुड यू प्रिफर पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक? Private sector banks. Public sector banks में top 2-3 will do well, but कुछ ना कुछ वो आ जाता है. और अभी politics इतना बढ़ जाएगा ना अगले 2 साल, no government will try. जो political capital था वो पहले 2-2.5 साल का ही था, अब नहीं बचा political capital to take strong decisions. तो value आपको दिख रही है. Private sector banks 5-6 top के हैं. They will continue to eat market share and grow. Something like SBI over time, yes, if it unlocks its subsidiaries and all that. But ये बाहर वाले ही लोग पैसे बना के ले जाते हैं. अब कार्लाइल ने 2,500-3,000 करोड़ डाला SBI कार्ड्स में, and निकाल के ले गए 28,000 करोड़. So you know वो बाहर लोगों के पैसे बन जाते हैं, और हमारे कंपनियां, because of various reasons, the bankers there in the public sector are the finest people. I worked in SBI cards in my GE days. I ran that business. I have seen the quality of people in SBI. उसके मुकाबले के हैं नहीं private sector में, किसी को उस तरह की समझ नहीं है. At least हमारे time में ऐसे होता था. हमारे भी top वाले टक्कर के होते हैं, but आप आम ले लीजिए public sector banker and आम private sector banker, जमीन आसमान का फर्क है. जो ट्रेनिंग है, जो comprehensive view है, and जो long term orientation है, companies are not working for the shareholder. So as a pure shareholder, I'll say private sector banks. One more question is from Ashok Mehta ji. He's saying, what about this IDFC and IDFC First Bank, this merger? Recently, 2-3 days back, one news has been coming. सर ये जो इनका डीमर्जर भी हुआ था, बहुत लोगों को बेचा गया था, बहुत ब्रोकर्स ने निकाले थे रिपोर्ट्स. क्या हुआ, आपके पैसे बने क्या इतने सालों में? I would say when you have ICICI Bank, Axis Bank, Kotak बैठे हुए हैं जो दिख रहे हैं आपको, ये ठीक है, ये कहानी बनेगी. Over time it will come, something will happen. I don't see much. Fundamentally, I don't see much.
Rajnish Shukla ji, great analysis by great Bagga sir. Thank you, sir. Navneet Bitra ji, what is the scope in metal sector? See, metal will do well. क्योंकि क्या हुआ last year के price rises से they have deleveraged a lot. So balance sheets are good and they will expand with the expanding Indian economy. They will do well. But the kind of growth we saw last year will not come. You know, what we benefited last year, we don't see that kind of return. So it will be in line with the market kind of returns. It will not be a top performing sector. And China is the biggest risk. If you ask me, if China slow down to dikh raha hai, so unless ये lunar year के बाद February March में कभी ये stimulus लेके आए China, तो metals दौड़ेंगे. नहीं तो, you know, so it's a very binary thing dependent on China, the performance of the metal sector. So I would say right now, no, maybe it changes in March. We'll see. Right now, you're better off in all these other sectors, but on a longer term basis, the well-run metal companies you can hold. कोई उसमें problem नहीं है. One more question from Nitesh Bansal ji. Good evening, sir. What do you feel about cryptocurrency future? We are avoiding it, but it is the correct. Is it the correct approach, or we should learn this technology for future? नहीं, learn तो कर लेना चाहिए, but मेरा ये है tax हमें पता नहीं है. And see, we are all. सर लर्न के लिए ही तो हमने इसमें बता दूं नितेश जी को, हम 2 सेशन उसमें क्रिप्टो के भी रखे हैं, पर हमने आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने की राय जो है वो हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो उनकी राय यूज करें आप जी. और देखिए हमारा ऐसा है ना कि विद द डिपार्टमेंट आवर रिलेशनशिप इज वेरी डिफरेंट. तो ये अब हम लेके बैठे हैं और वो बोले जी कि आप भी क्रिप्टो करते हो, तो यू नो यू विल लूज सम क्रेडिबिलिटी. होपफुली नवंबर में लोग पूछते हैं, मैंने बोला चलो विंटर सेशन में कुछ अंदेशा आ जाएगा, बट कुछ आया नहीं. So obviously government को भी मुश्किल पड़ रही है कि how to regulate it. It's not easy. Even US government has not been able to do. Singapore government धीरे धीरे exchanges को लिस्ट कर रही है. अभी 2 ही एक्सचेंज हो पाए हैं. 100 ने अप्लाई किया, उसमें से उन्होंने सिर्फ 2 को अप्रूव किया है. तो लगता है BSE NSE को ही दे देंगे मैंडेट का. और मेन थिंग है कि इसको टैक्सेशन कैसे होनी है और GST कहाँ पे लग रहा है, ये सब पता लग जाए तो ठीक है. That's why I have told people, लोगों के बहुत पैसे बने हैं, यंगस्टर्स के जिनको समझ नहीं है टैक्स वगैरह की, उन्होंने सबसे ज्यादा बनाए पैसे. तो गुड strength to them, but we as professionals I would not recommend till we get clarity. तो बजट हो जाने दीजिए, फिर अप्रैल fully we'll have a new tax regime. That might be a better, but सीख के रख लीजिए, चलेगा तो सही है. क्रिप्टो करेंसी चलेगा कि नहीं पता नहीं. कि RBI का तो व्यू बहुत क्लियर है कि बंद कर दो. सुभाष गर्ग साहब की कमेटी ने बोला बंद कर दो और RBI की करेंसी बनाओ अगर आपको खरीदना है. बट गवर्नमेंट भी देख रही है, इतना आसान नहीं है. टेक्नोलॉजी और करेंसी को इकट्ठा को सेपरेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि करेंसी चलती है जब लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. तो टेक्नोलॉजी आपके लिए अवेलेबल है जब करेंसी चल रही है. इन्होंने इकट्ठा ही बना दिया दोनों को, तो इतना आसान नहीं है. और ये जो NFT वगैरह टोकन्स चल रहे हैं कि आज की कॉन्फ्रेंस की मैं फोटो ले लूं और बेच दूं इसको और यही फोटो रहेगी, ये जी बन गया टोकन. किसी कुत्ते का, किसी मंकी का, किसी आदमी का. अब ये हमारे क्रिकेटर्स का बनाने जा रहे हैं, एक कंपनी वो कर रही है और बिक रहे हैं, करोड़ों रुपए के बिक रहे हैं. अमिताभ बच्चन के करोड़ों में बिके कुछ उनके सोवेनियर्स. तो ये कौन कह सकता है कि ये बबल है कि नहीं. एक वो खाली जगह बेची, उन्होंने बोला ये डब्बा है जी, इसमें खाली जगह है और हम ये बना देंगे. न्यूयॉर्क में जाके एक टाइल लगी हुई थी, उसमें बोला जी मैंने रख दिया खाली जगह में. किसी ने 1.3 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिए. तो वो है ना कि बादशाह ने कपड़े डाले हुए कि नहीं. वो छोटा लड़का आके बोलता है इसने तो कपड़े नहीं डाले हुए. तब तक सब बोल रहे थे कि एम्परर हैज वेरी गुड क्लोथ्स. डेफिनेटली सर. एक और क्वेश्चन जो हमारे ख्याल में आता है कई बार, जो है जिस तरह से आप दिया, कार्लाइल जो है वो इतना पैसा बना के चली गई SBI कार्ड में या PNB हाउसिंग में. आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो आज व्यूअर्स हैं, उनके कई सारे HNI क्लाइंट्स हैं
और कुछ लोग खुद का भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे, उनके दिमाग में एक हमेशा क्वेश्चन रहता है, आईपीओ जब आता है तब तो बहुत महंगा होता है, बट कई सारे स्मार्ट इन्वेस्टर उससे पहले अनलिस्टेड कंपनीज में पैसा लगा लेते हैं। उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से स्मॉल मनी उसमें इन्वेस्ट करें? देखिए, काफी ब्रोकर्स हैं, आप ऑनलाइन भी जाएंगे तो काफी ब्रोकर्स अब ये सुविधा कर रहे हैं, और फंड्स भी हैं, एआईएफ जो होते हैं ना, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, बट उसके लिए 1 करोड़ का टिकट साइज चाहिए। तो वो भी ऐसे हैं जो प्री आईपीओ खरीद लेते हैं और करते हैं। ये काफी वेल्थ मैनेजर्स इस तरह के एआईएफ चलाते हैं, अच्छे रिटर्न भी देते हैं। नहीं तो देयर आर सम ब्रोकर्स हु स्पेशलाइज ओनली इन दिस, एंड सम बिग ब्रोकर्स आल्सो प्रोवाइड दिस। तो आप अपने ब्रोकर से चेक करेंगे तो वो आपके 4-5 ले आएंगे। ऑलवेज आस्क फॉर 3-4 कोट्स, क्योंकि इसका प्राइस डिस्कवरी नहीं है, कहीं लिस्टेड नहीं है, लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है, कोई खरीदने वाला आएगा तब आप बेच पाएंगे। तो ऐसे लगता है भाई एनएससी 3.5 में मिल रहा है, कोई बोलेगा 3 में मिल रहा है, कोई आके बोलेगा 2,500 में मिल रहा है। तो इस तरह का वेरिएशन होता है, जैसे रियल एस्टेट में होता है ना, एक फ्लैट सी फेसिंग है, एक फ्लैट दूसरी तरफ है, और इतना सेम साइज, सेम फ्लोर, सेम लिफ्ट, बाकी जस्ट एक वो व्यू के कारण इतना बदल जाता है। तो वो वैल्यूएशन इसकी इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। तो 3-4 कोड जरूर ले लीजिए, एंड ओवर टाइम एज यू ट्रेड विद दोस ब्रोकर्स यू विल गेट यूज्ड टू इट। आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, एंड देन वंस इट गेट्स लिस्टेड तो वो 6 महीने के बाद यू कैन ट्रेड ऑन इट, तब तक आपको होल्ड करना है। तो ये नॉर्मली आपको चीपर प्राइस पे मिल जाता है, बट चलना चाहिए। एक के आईपीओ हो जाए, एनएससी वाले अब देखिए कब से बैठे हुए हैं इन्वेस्टर्स लेके, एफआईज ही कितने उसमें से निकल गए, आगे चले गए बेच के। बहुत अच्छी कंपनी है, जब भी लिस्ट होगी वो कंप्लायंस इशू आ गया। अभी पेटीएम वगैरह लोगों ने ज्यादा लेवल पे खरीदा, वो 1300 पे आ गया। तो ये रिस्क रहता है, इसलिए फिर डाइवर्सिफाई करना है, बहुत सारी कंपनियां खरीदें एक ही में, या एक अगर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं तब आप कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स भी जब लिस्ट हुआ तो लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ गया था, तो टाइम लगा आने में, उसका प्राइस डिस्कवरी होने में। अब वो जी और एसबीआई हम चलाते थे, एसबीआई कार्ड बहुत वैल्यूएबल कंपनी थी, मार्केट लीडर थी बिल्कुल। जी ने फिर, क्योंकि हमारा जी मनी बंद हो गया ग्लोबली, अनफॉर्चुनेटली जी ने छोड़ दिया उसको, और एसबीआई कुडंट वैल्यू इट प्रॉपर्ली, तो पी फंड घुस गए अंदर। अब एसबीआई को क्या दरकार थी लेने की पी फंड से पैसा? एसबीआई इज द मदर ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी हो, एसबीआई हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही खरीद लेना चाहिए था, बट वो पी वाले ने, दे हैव रियलाइज्ड द वैल्यू, दैट्स द थिंग। तो ये बेनिफिट है पी का आने का, यही है कि अब एलआईसी जैसे आ रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये मैं एवरी टाइम गवर्नमेंट का भी जब कंसल्टिंग होता था बिफोर बजट, आई वुड ऑलवेज से क्रिएट अ नेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। ये मार्गरेट थैचर ने किया था 1980s में। ब्रिटिश टेलीकॉम, ब्रिटिश कोल, ब्रिटिश एयरवेज, ये सब नेशनलाइज थे लेबर गवर्नमेंट से, उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। और मैंने ये नोट भी भेजा था, एलआईसी में आप केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए रखिए, इंस्टीट्यूशंस को मत आने दो, और बोलो हर एक भारतीय को एट गुड, बेशक आप 2 इश्यूज कर लो, सेबी से डिस्प्ले आप ले सकते हैं, एंड सो दैट द क्राउन ज्वेल स्टे विद इंडियंस, and Indian domestic institutions with who are majorly owned by Indian things, and उसके बाद आप ओपन करो, एंड यू अलाउ इंडियंस के आपको बेचना भी आए तो ये 20% और आप करो, तो यू क्रिएट अ नेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। इस तरह का एक बारी मैंने दिया था तरकीब, बट होगा नहीं, इट इज ब्लू स्काई थिंकिंग। बहुत ही अच्छा आपका आइडिया है, बट पता नहीं भारत सरकार इसको अप्लाई करेगी नहीं करेगी। उनकी अपनी एक सोच होती है, उसी दायरे में सोचते हैं। वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का जो कमी है, इसीलिए आपने पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर बैंक को सेलेक्ट किया। वही एक मेजर कारण होता है कि वो बहुत टू दी लाइन चलते हैं। बिल्कुल। एक हमारे सीए मित्र हैं अजय पालीवाल जी, उनका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया इन फ्यूचर?
See, future is very good, but you have to see globally क्या होता है. 9 out of 10 companies fail होती हैं. अब जो IPO तक पहुंची है, मतलब काफी पड़ाव पार करके आई है. प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये प्राइवेट वाले लालची बहुत होते हैं. So they are selling to you at, अब जैसे नाइका वगैरह अगर आप ले रहे हैं, 2 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है और आप 1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे वो कंपनी आप पब्लिक को दे रहे हैं, तो कितने सालों का रेवेन्यू, कितने सालों का प्रॉफिट ऑलरेडी बेक्ड इन है. तो मार्केट में हम क्या कहते हैं, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू. अगर आज उन्होंने केक खा लिया, आपको चिपका दिया, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी 10 साल 15 साल, होप करना पड़ेगा कि ये कंपनियां बहुत अच्छा करें टू जस्टिफाई दैट वैल्यूएशन. इसमें से निकलेगा, टेस्ला निकलेगा, अमेजोन निकलेगा कोई, बट कौन सा निकलेगा पता नहीं. तो इसलिए मैं ये केस देता हूँ. एक कॉफी कैन इन्वेस्टर है कर्बी करके, जिन्होंने कॉफी कैन का नाम इन्वेंट किया था 1984 में. सो उनके क्लाइंट थी वन लेडी. He used to give advisory के buy sell ये सब. And the lady's husband was a prominent lawyer. अब वो 10 साल कर्बी के पास वो एडवाइस लेती नहीं, वो बोलते थे ये खरीदिए ये बेचिए. फिर वो लॉयर गुजर गए, उनके सेफ में से लेडी ने पाया इतने सारे स्टॉक्स के सर्टिफिकेट पड़े, तो कर्बी के पास ले गई कि आप प्लीज हेल्प करिए, ये मेरे नाम में करने के लिए क्या करना है, बेचना है. कर्बी ने जब देखा तो जिस दिन महिला खरीदती थी, दैट डे ओनली द लॉयर हस्बैंड वाज आल्सो बाइंग. ही वाज जस्ट पुटिंग $5,000 इनटू एवरी परचेज. ओनली डिफरेंस वाज व्हाट शी वाज सेलिंग, ही वाज नेवर सेलिंग, सो ही वाज ओनली बाइंग. अब वो $5,000 के इतने जो शेयर थे, उसमें से कुछ तो थे जो जीरो हो गए थे, कुछ थे $2,000 भी नहीं बचे थे, 10 एक थे जो $5,000 का 20 टाइम्स बन गए थे 10 साल में, $100,000 के ईच. एंड एक शेयर था जो $5,000 का शेयर 160 टाइम्स बन गया था 10 साल में, $800,000. वो शेयर था हेलॉइड, जो कंपनी जेरोक्स बन गई आगे जाके. सो वो एक शेयर was more than the lady's portfolio which was actively managed, and this was fill it, shut it, forget it. In fact वो गुजर ही गए थे, किसी ने देखा ही नहीं उनका portfolio, and he would never sell it. तो एक ऐसा जिंदगी में निकालना है. और ये रिसर्च है 1926 से 2016 की एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने 65,000 शेयर्स ग्लोबली देखे. अमेरिका में 26,000 शेयर थे. 1,000 shares out of that 26,000 gave all the market return. $32 trillion बने उस 90 साल में. लोगों के स्टॉक मार्केट से 32 trillion 1,000 companies gave. Now in 1926 or 46 or 66, could you tell which are those 1,000 companies? You could not have. इसलिए हम कहते हैं diversify. Long term रहना हमारे हक में है as retail investors, non-institutional investors, and diversified, because we don't know that 4% which will give the thing. या तो आप वॉरेन बफेट हो, आपने कोका कोला पकड़ा, आज 7% कोका कोला है, वो इतना डिविडेंड खाते हैं जितना लगाया नहीं उससे ज्यादा डिविडेंड आता है. एप्पल 120 बिलियन का पकड़ा, वो एप्पल उनका 3 गुना हो गया 3 सालों में. एप्पल has tripled in the last 3 years. 120 बिलियन का 400 बिलियन हो गया. उसमें से डिविडेंड तो आप छोड़ ही दीजिए, $8-10 बिलियन डिविडेंड आ गया. या तो वॉरेन बफेट है, वो आई थिंक हम में से 99.999%. मुझे तो चेहरा दिखता है रोज सवेरे कि मैं वॉरेन बफेट नहीं हूं, तो मैं डाइवर्सिफाई करूंगा, लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा. तो स्टार्टअप्स को बी स्केप्टिकल. सम ऑफ देम विल बी वेरी गुड, मोस्ट ऑफ देम विल गो टू जीरो. अब वो कौन से अमेज़न है वो कहना मुश्किल है. ईच ऑफ देम विल गो डाउन 50%. वो भी आई कैन एश्योर यू. अमेज़न भी गया था 50%. अमेज़न का जो 3,500 का शेयर है, $5 पे मिल रहा था 2000 में, $5 में. आज 3,500. नहीं, मैंने नहीं खरीदा.
अक्ल नहीं थी। अक्ल नहीं थी, मेरे पास सिटी बैंक ही था जो $70 का $1 हो गया। हमारा उसमें नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, टीवी पे बोलते हैं देवेंद्र जी, सब आके कहानियां पीछे फोर्स फिट करके ना फिर कहानियां सुनाते हैं, और ये जी ये करना, मैंने ये किया वो किया। फिर हम कहते हैं जी आज का बता दो ना, आज का अमेजोन कौन है वो बता दो, वो कोई नहीं बता सकता। डेफिनेटली सर, अगर वो पता होता तो हम सब ये ना करके वही कर रहे होते। वही कर लेते हैं। तो हमारा एक और क्वेश्चन आया है ललित बाहेती जी का, व्हाट यू फील अबाउट टेक्सटाइल सेक्टर, इट विल परफॉर्म और नॉट इन 2022? टेक्सटाइल विल परफॉर्म। टेक्सटाइल प्रॉब्लम क्या है, एक तो बहुत पीछे हम रह गए कि गवर्नमेंट जो सपोर्ट लेवल था वो नहीं उतना मिला जितना चाहिए था। और खैर पीयूष गोयल इज डूइंग सम वर्क टुवर्ड्स इट आल्सो, एंड उनसे उम्मीद है कि फाइनली ही विल अंडरस्टैंड एंड डू समथिंग। अदरवाइज बांग्लादेश देखिए, वियतनाम देखिए, जब चाइना से पीपल वर ट्राइंग कि चाइना में अब लेबर बहुत कॉस्टली हो गया, प्लस पोल्यूशन वगैरह को वो देखने लग गए, तो ये लो वैल्यू एडेड वर्क दे स्टार्टेड सेइंग कि यहाँ से निकालते हैं, हम हायर टेक्नोलॉजी काम करेंगे। बांग्लादेश हमारे से बड़ा बन गया। अब उधर है, देखिए आग लगती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर लेबर रिलेशंस एंड प्रॉपर फैसिलिटीज। बट फिर भी हमारे पास जो नेचुरल एडवांटेज था हमारा टेक्सटाइल का, वो हमने खो दिया। तो टेक्सटाइल अच्छा करेगा, प्रॉब्लम ये है बहुत साइक्लिकल हो गया। और लोगों ने ना स्पेशली 2008 में जिस तरह से सेक्टर नीचे गया और जो कर्जे उठा लिए थे कंपनियों ने, वो बहुत हो गया। अब ये कॉटन प्राइस इज अनदर थिंग विच इज हर्टिंग। चाहे हम इतना बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हमारा कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है रादर देन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करें। हमारा कॉटन जा रहा है वियतनाम और बांग्लादेश, वो उस पे बना के कपड़े बेच रहे हैं। उल्टा हमें वो करना चाहिए सारा वैल्यू एडिशन। तो पूरा इकोसिस्टम चाहिए था, एंड स्पेशली विद चाइना बिकमिंग वेरी कॉस्टली, हमारे पास चांस था, वो मिस हो गया। तो इतना नहीं है, फ्यू एंड फार कंपनीज। अब ये पी वाली कंपनीज हैं जैसे गोकुलदास वगैरह विच आर ओन्ड बाय द पीज, दे विल डू वेल। वो प्राइवेट इक्विटी वाले इनको चलाएंगे। बाकी हिंदुस्तानी प्रमोटर पे मेरे को इतना विश्वास नहीं है इस सेक्टर में। बहुत पैसे वैसे बहुत खा जाते, छोड़ते नहीं है कुछ शेयर होल्डर के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एन मेन इश्यू विद इंडियन टोटली। सर एक और क्वेश्चन आया नवनीत जी का, टुडे शुगर स्टॉक्स वर ऑन फायर, व्हाट इज द फ्यूचर सर? शुगर इज गुड बट वेरी साइक्लिकल अगेन, वेरी गवर्नमेंट ओन्ड। तो प्रॉब्लम शुगर में प्रॉब्लम क्या रहता है, अब यूपी इलेक्शन आ रही है, लकीली क्या हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट ने सब दिया, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट दिया, किसानों को ज्यादातर पैसा मिल गया है। बट हर बारी नहीं तो हर इलेक्शन में महाराष्ट्र हो यूपी हो, यही प्रॉब्लम आ जाती है, किसानों की एमएसपी बढ़ाते जाते हैं गन्ने की, चाहे उस एमएसपी पे शुगर वाला काम कर सके ना करे। एथेनॉल का जो प्ले आ रहा है, जो गडकरी साहब कर रहे हैं, वो री रेटिंग कर रहा है शुगर का। दूसरा, ब्राजील का क्रॉप दूसरे साल फेल हुआ है, तो शुगर ओवरऑल जो 15 सेंट पे जा रही थी 20 सेंट पहुंच गई ग्लोबली, बिकॉज ये ब्राजील का क्रॉप 2 बारी फेल हुआ। कॉफी में भी ये हो रहा है, शुगर में भी यही हो रहा है। तो शुगर इज लुकिंग गुड। अगेन वेरी फ्यू कंपनीज, यू नो, जैसे ये साउथ बेस्ड हैं, big houses, I would go with them rather than, and the bigger 1 or 2 bigger companies. Turnaround story आप देखने जाएंगे, वो कभी चलती है कभी नहीं चलती, उसमें बहुत और घेराव आ जाता है। अगेन अगर बाहर से फंडिंग आ जाए, कोई पी वगैरह आ जाए, तो वो बहुत अच्छा रहता है, दैट इज ऑलवेज मच बेटर। बट एथेनॉल स्टोरी है, एथेनॉल प्रोवाइडर्स भी हैं जो एथेनॉल प्लांट बना रहे हैं, वो भी अच्छा करेंगे। वेरी फ्यू कंपनीज आर देयर। Again, governance wise, I don't like them too much. So sector बहुत छोटा है, बहुत cyclical है, बहुत regulated है, बहुत political है। और आपके सामने है cooperative mills जो owned होती हैं politician के द्वारा, तो वो आपको खराब करते हैं। बहुत मुश्किल भी है ये चलाना शुगर मिल्स। मेरे कस्टमर होते थे बेचारे जो ये को जनरेशन भी करते थे, एंड यू नो
हर यूनिट के लिए उनको पैसे देने पड़ते थे, अपना ही पैसा वापस लेने के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। और पॉलिटिशियन वुड फर्स्ट कम टू देम कि हम तो आपको इतना पैसा देते हैं हर साल, इतना हमें चाहिए। तो वो बहुत मुश्किल है। द एनवायरनमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन देम, बट एथेनॉल इज अ ग्रेट स्टोरी। स्टिक विद द टॉप 2-3 कंपनीज, इट शुड डू वेल। शुगर की बात चली तो इसी पे जैसे आपने बताया टर्न अराउंड स्टोरी जो है, तो क्या श्री रेणुका स्टोरी, रेणुका शुगर इसमें फिट होता है सर? उसी की तरफ इशारा था, बिना नाम लिए। One more question is from Ankit Agarwal ji. There is a report by Financial Times on forecasting the world in 2022. They have estimated S&P 500 to fall more than 10% in financial year 2022. What is your take on this, and what may be the impact on this on Indian market? सर, एक तो है कि देयर आर नो एक्सपर्ट्स। सेकंड, जो हम फोरकास्ट करते हैं वो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि क्या पता अभी कल रशिया घुस जाए यूक्रेन में एंड बाइडेन बोले चलो जी हम 7th फ्लीट भेज रहे हैं मेडिटेरेनियन में। क्या पता है, हम अपने को कुछ नहीं पता। ये वर्ल्ड इज, एंड वैल्यूएशन वाइज इतना हाई है ये वर्ल्ड। सो देयर आर प्लेयर्स हु आर सेइंग 50% गिरेगा अगले 3-4 साल में, ये मार्केट गिरेगा। हाँ जरूर गिरेगा, 3 साल में गिरेगा पता नहीं। ये हार्वर्ड मार्क्स करके एक बहुत फेमस हेज फंड मैनेजर है, हार्वर्ड मार्क्स, वो डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग कहते हैं। लास्ट ईयर लास्ट और नहीं 2020, अभी ये नया साल निकल गया, अभी एक हफ्ता लगेगा इन लास्ट ईयर को ठीक करने में। So 2020 he said, markets are looking frothy, but he says, I remember Keynes का word के markets will stay irrational longer than you can stay solvent. तो अब आप शॉर्ट करके बैठ जाओ S&P 500, मार्च तक सेंट्रल बैंक $725 बिलियन स्टिमुलस डालने वाले हैं मार्च तक। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, ECB और फेड का आखिरी सारा पैसा मार्च तक 725 बिलियन मार्केट्स में जा रहा है। आप क्या करोगे उसके सामने? अनलेस पुतिन या चाइना या ईरान कोई मिसाइल छोड़ दे तो दूसरी बात है, या वो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर कुछ कर दे, बाकी कुछ दिखता नहीं है सामने कि ये ऐसा होगा। हाँ, एंड ऑफ द ईयर तक बहुत आसान है, हो सकता है। हर साल 5% मार्केट 1 या 2 बारी गिरता है, हर 2 साल में 10% गिरता है, हर 3 साल में 20% गिरता है, 4 साल में 30% गिरता है, 5 साल में 50% दिखा देता है मोस्टली, 5 से 7 साल में। तो लाजमी तौर पे पिछले साल 5% ही गिरा, इस साल 10% गिरना चाहिए। बट ये मैं फॉर्मूला के तौर पे आपको नहीं कह सकता, ना टाइमिंग। और ये जो लिखते हैं, ये एक ये ब्रोकन क्लॉक सिंड्रोम भी है। कैसे फेमस हुए दुनिया में, 20 साल तक आप मंदी करते रहिए कि मार्केट इस साल गिरेगा। ये जो रॉबर्ट कायोसाकी या रिच डैड पुअर डैड वाला, वो 20 साल से बोल रहा मार्केट गिरेगा। ये ग्लूम डूम वाला मार्क फेबर एक बारी 1987 में ठीक हो गया था इसका, तब से ये ग्लूम में है। अपने रघुराम राजन जी हर साल कहते हैं मार्केट्स आर फ्रॉथी, ये इकोनॉमीज खत्म है, अभी तक तो नहीं हुई। 3 साल ग्लोबल मार्केट है, 6 साल इंडियन मार्केट है। होगा, जरूर होगा, मार्केट्स होते ही हैं। तो हार्वर्ड मार्क्स ने 97 में कहा था ये .com ज्यादा है, 96 में एलन ग्रीनस्पैन ने कहा था इरैशनल एक्सुबरेंस। वो 4 साल मार्केट चल गया, 3 साल हार्वर्ड मार्क्स के बाद 4 साल एलन, एंड स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड सेड दिस। So someone very smart only would have written in Financial Times. I cannot invest based on that. I have no visibility. हाँ गिरेगा, जरूर गिरेगा, बट वो सोच के अगर मैं मार्केट से बाहर बैठ जाऊं, आपको मैं एक एनालिसिस देता हूं। लास्ट 20 साल में अगर आप मार्केट में नहीं होते, 30 दिन नहीं होते, आपके रिटर्न आधे हो जाते हैं। 30 बेस्ट डेज। अगर आप 50 बेस्ट डेज मार्केट में नहीं होते, आपका कोई रिटर्न नहीं आता। तो सोचिए 20 साल में अगर 250 दिन भी हो वर्किंग साल के, सो 2500, 5000, 5000 में 50 दिन केवल, 5% of the days you were out of the market, you lose the entire returns of 20 years.
ये हालत है मार्केट की। तो आम निवेशक के लिए क्या है, आप बने रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। कॉफी कैन इन्वेस्टर के बारे में सोचे, मेरे यूट्यूब चैनल में है एक कहानी करके, बहुत वायरल हुआ है ये। आई हैव पुट अ 30-minute वीडियो ऑन दिस, जरूर देखिए जाके, ये कॉफी कैन इन्वेस्टर की। और आम लोग क्यों पैसा नहीं बनाते, वो डेलबार करके एक कंपनी है, वो स्टडी करती है कि मार्केट में कितने पैसे बने, म्यूचुअल फंड्स ने ऑन एवरेज कितने बनाए, एंड आम निवेशक ने। सो दे गो टू द कैम्स एंड द कार्वीज ऑफ द ग्लोब। अगर मार्केट 11% दे रहा है, म्यूचुअल फंड आपको 8.5% देता है, 2-2.5% जो उसकी फीस है वो निकाल लीजिए, बाकी थोड़ी बर्बादी करते हैं। और जो आम निवेशक 4% बना रहा है, बिकॉज जब बहुत यूफोरिया होता है सब बैठ जाते हैं, और जब मंदी होती है सब निकलने लग जाते हैं। ये 2020 में HNIs के साथ हुआ, SIPs नहीं हुआ। जो 11,000 करोड़ 3.5 करोड़ फोलियोज आ रहे हैं महीने दर महीने, सबसे ज्यादा पैसे उनके ही बने। तो सबसे आसान तरीका है कि लोएस्ट कॉस्ट फंड में, ETF में या इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में भी डालिए, लोएस्ट कॉस्ट डायरेक्टली जाके SIP के तौर पे महीने दर महीने 40 साल के लिए डालते रहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइफ विल बी वेरी सिंपल। ट्रेडिंग का भी सोचना नहीं पड़ेगा, अजय बग्गा को क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ेंगे, ना अजय बग्गा को तैयारी करनी पड़ेगी। ऑल ऑफ अस विल बी हैप्पी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि स्टे इन्वेस्टेड, यही एक मूल मंत्र है। और कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि फ्यूचर का अमेजन क्या, कौन होगा, कौन टेस्ला होगा। तो सर का जो एक अब तक का निचोड़ निकला है, आप इन्वेस्ट करते रहें और अपना 1 या 2% पैसा जो है आप न्यू एज कंपनीज में लगा दें, और वो भी डाइवर्सिफाइड करके बहुत सारी कंपनियों में। तो क्या पता उसमें से कोई एक टेस्ला निकलेगा और हमारे पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न वो एक ही दे देगा। वैसे सही भी कहा है कि हमारे दिमाग में भी कई बार हम 100 आइडिया सोचते हैं, बट 100 में से 90 आइडिया तो सोचने तक ही रह जाते हैं, 10 हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उस 10 में से 8 इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम की वजह से चले जाते हैं। बट अगर एक आइडिया भी आपका चल निकलता है तो आप सुपरस्टार बन जाते हैं। 100 में से एक आइडिया सक्सेसफुल होने पे आदमी सुपरस्टार बन सकता है। तो हमें 100 कंपनियों में पैसा लगाना है, और प्रभु से ही प्रार्थना रहेगी कि उसमें से एक सुपरस्टार निकल जाए तो आपका काम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है रजत बुराना जी का। रजत बुराना जी पूछ रहे हैं, इफ कोरोना अगेन इम्पैक्ट कंट्री मोर देन डेल्टा वेरिएंट, देन हाउ मच इट में अफेक्ट GDP एंड स्टॉक मार्केट। थर्ड वेरिएशन जो वेरिएंट आ रहा है सर ओमिक्रॉन की वजह से। देखिए, अब कहना मुश्किल है। सबसे पहले यही कहूंगा, साइंटिस्ट तो हम कोई नहीं, और साइंटिस्ट को भी नहीं आता, सरकारों को भी नहीं आता, तो हम आम लोगों को क्या आएगा। बट आप एनालाइज कर सकते हैं, एज अ फाइनेंशियल पर्सन यू एनालाइज इट। एक है कि सरकारें सीख गई हैं। पहला हमें स्पेनिश फ्लू 1918 का पता था, हिस्ट्री बुक्स में ही पता था। अब एक्चुअली सरकारें सीखी कि भाई लॉकडाउन कैसे होता है, लॉकडाउन का बेनिफिट क्या है, लॉकडाउन का डिसएडवांटेज क्या है, कैसे इकोनॉमीज को संभालना है, सेंट्रल बैंक सीख गए। वो सारा नॉलेज अभी आ चुका है। और दूसरा है वायरस का, जो हमने देखी है, पकड़ रखी है वायरस की, एवोल्यूशन क्या है। वायरस कम और कम गंभीर होता जाता है, तभी वो सरवाइव कर पाता है। अगर वो लीथल होगा, उतने तो जिस्म आप जला देंगे ना, लोग मरते जाएंगे, एंड यू विल बर्न इट ऑफ, तो वायरस भी मर जाएगा उसके साथ। वायरस को जीने के लिए एंडेमिक बनना पड़ता है, कि वो जुकाम या फ्लू बन जाएगा। ये हमने देखा है, ये एशिया में भी सार्स जब आया एशिया में, 1 साल तक भयंकर रहा। अगले साल जब आया सार्स, फ्लू के तौर पे आ गए। 2-3 दिन तक लोगों को माइनर बीमारी हुई, थोड़ा बुखार आया, थोड़ा जुकाम लगा, ठीक हो गए, और बाद में टेस्ट किया तो सार्स था। तो ये 2 साल अब हो गया है। ये ओमिक्रॉन जो लग रहा है कि संक्रमण ज्यादा है, फैल तो बहुत तेजी से रहा है, बट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही, सिवियर नहीं हो रहा है। और ये क्यों है, गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है। तो ये जो लंग में डेल्टा घुस जाता, लंग्स में घुस जाता था तीसरे दिन तक, ये ओमिक्रॉन आपके गले में ही बैठा है। तो आप गरारे करिए, डिस्प्रिन घोल के गरारे करिए, कफ सिरप पीजिए, गर्म पानी पीजिए, स्टीम लेते रहिए, गला अपना ठीक रखिए, विल बी ओके। होगा तो नियरली सबको होगा, वैक्सीन कुछ नहीं इससे दे रही,
तो फर्स्ट है लोगों, गवर्नमेंट्स का एक्सपीरियंस हो गया, इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस हो गया, हम सब का एक्सपीरियंस हो गया कैसे जीना है। दूसरा हुआ ये माइल्डर वर्जन आ रहे हैं। तीसरा जो है कि ट्रीटमेंट आ रहे हैं। फाइजर की दवाई हो गई, मर्क की दवाई भारत ने 28 दिसंबर को मोलनुपिराविर बना दी है। 2500 रुपए के कैप्सूल आते हैं, 4 कैप्सूल दिन के लेने हैं, 5 दिन के लिए। डॉक्टर आपको लिख के दे देगा, जैसे ही लगे थोड़ा, जैसे ही पॉजिटिव है वो दवाई लेके बैठ जाइए, 5 दिन की एंटीवायरल आ गई है, ठीक कर देगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आ गई है, 60,000 रुपए का टीका है, 3 घंटे में आपको ठीक करता है। अस्पताल जाइए, उससे टीका लगवाइए, वो आपको मॉनिटर करेंगे 3 घंटे तक, कुछ आपको रिएक्शन नहीं आया घर भेज देंगे, अगले सुबह आपको सिम्टम भी नहीं होंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आ चुकी है। इस तरह की चीजें आती जाएंगी। तो ये जो है इतना बड़ा नहीं दिख रहा इम्पैक्ट। अब कल मार्केट गिर जाए मैं कह नहीं सकता है, मार्केट गिरेगा जरूर, थोड़ा बहुत गिरेगा, और बहाना उस दिन हम सब आके बोलेंगे क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ गए। आज तक जो दिन के 1 करोड़ केसेस आ रहे हैं दुनिया भर में, उसको हम कुछ नहीं कह रहे। हम कह रहे नहीं जी मार्केट ने नजरअंदाज कर दिया, तो वो कहानी बनाई जाती है आफ्टर द एक्शन। कहानी कुछ भी आपको ब्लेम करना, चलो ओमिक्रॉन पे ब्लेम कर दो, बट लगता नहीं कि इतना डीप इसका इम्पैक्ट होगा जीडीपी पे, इकोनॉमी पे, लोगों पे भी। अब देखिए मुंबई में हमारे केसेस इतने बढ़ गए, बट मौतें 1 आ रही है, दिन की 1 मौत आ रही है, वैसा नहीं है। तो सितंबर के लेवल के केसेस आने लग गए, बट वी आर सीइंग डेथ्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है। और वही दुनिया भर में भी, यूके में भी यही हो रहा है, लोगों को माइल्ड आता है 2-3 दिन का, और उसके बाद यूर ओके। और ये गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है, इट्स नॉट पेनिट्रेटिंग द लंग्स, विच इज वेरी गुड न्यूज, कि वो गले तक ही, आपको खांसी जुकाम तक ही रह जाएगा। तो गला ठीक रखिए, गले को करते रहिए, गर्म पानी पीजिए, वी शुड बी ओके। तो हम सभी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं सर, 2020 में इसका बहुत ही लोअर वर्जन बस रह जाए, एंडेमिक बन जाए। इसको हाँ। बस फिर आगे हम इसको देखते रहें। किसी तरह का जान की जो हानि हमने सेकंड वेव में देखी थी, और जैसे की परिस्थितियां हमने सेकंड वेव में देखी थी, वैसी नहीं को मिले। विद दिस Australia Jane, since petrol and diesel prices are skyrocketing, do you see scope in renewable energy companies? If yes, then please suggest companies which we can सारे look. जो ऑटो कंपनियां है ना, ये सब रिन्यूएबल बनाएंगे। अब ओला है तो लिस्टेड नहीं है, और जब आएगा भी तो इतना महंगा आएगा, और 90,000 उसने, बजाज ऑटो ने कहा कि 300 करोड़ मैं डाल रहा हूँ ईवी में। अब होंडा, बजाज ऑटो देखिए, अगर आप, ये विश्व भर के बिगेस्ट 2 व्हीलर्स बन थे, टीवीएस है जैसे, एंड बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ ये लड़ रहे थे, बेस्ट इन क्लास ऑटो कंपनीज के साथ, गेटिंग मार्केट शेयर। तो क्या ये एंटर नहीं करेंगे ईवी में? तो जो है कंपनियां उन्हीं को ही खरीदिए, ऑटो कंपनियां। इनके जो सप्लायर हैं, बहुत सारे ऑटो एंसिलरी हैं, वो देख लीजिए, टॉप क्लास जो सप्लायर्स हैं वो खरीदिए। बैटरी में लग रहा है टाटा केमिकल वगैरह बनाएंगे, टाटा पावर हो गया, चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, ये सब हम देख सकते हैं। तो पूरा इकोसिस्टम है ईवी का, रिन्यूएबल्स का भी। रिन्यूएबल अब अडानी अंबानी खरीद रहे हैं कंपनियां, आपका सुजलॉन भी टर्न अराउंड होगा, बट वो अब उससे बेटर आपके पास विकल्प है कि बैंक इन सबको फंडिंग करेंगे। तो व्हाई नॉट बैंक्स ऑल्सो? बैंक्स तो सबके लिए पैसा देंगे, ऑटो खरीदने के भी पैसे देंगे, वहां पे 24% का लोन देंगे 2 व्हीलर के लिए, गांव वाले को, ट्रैक्टर वाले को। तो बैंक्स भी अच्छे हैं। तो ऐसी सोच रखनी है, ये नहीं है कि एक फॉर्मूला होगा जिंदगी का जो हमें पार पहुंचा देगा। देयर इज नो सीक्रेट। सीक्रेट है सेल्फ बिलीफ, अपना कॉन्फिडेंस। अगर आप एनालिसिस सीख लें तो आप कोई भी सिचुएशन झेल सकते हैं। तो एनालिसिस सीखिए, ऐसे नुस्खे मत सोचिए। दैट इज माय ओनली थिंग। तेजस शाह, एनी मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया जो कि सब सुनना चाहते ये अभी मैंने कहा। सर देखिए, मार्केट, भारत का मार्केट 1979
इंडेक्स वाज 100। 1984 में जब बीएससी बना है तब 500 रुपए का था, अब देखिए 60,000 हो गया। तो मल्टी बैगर यही है, आप मार्केट ही खरीद लीजिए ना। 20 साल के रिटर्न देखिए। अभी मैंने ट्वीट किया था परसों रात को, 31 दिसंबर के डेटा लेके मैं बैठा था, मेरे ट्विटर पे देखिए जाके। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल के मैंने रिटर्न दिए बीएससी और एनएससी के, और एंड में एक लाइन नहीं लिखी, दिस शोज यू वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन्वेस्टिंग। तो ये गेट रिच क्विक में ना हम पैसे गवा जाते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा है, उससे ना जेफ बेजोस ने एक बार पूछा अमेजोन वाले ने, ये मेरा है यूट्यूब पे एक और वीडियो मैंने बनाया था, क्या बोला था इसको, समथिंग, दिस इज माय जस्ट माय सेकंड वीडियो है, हिंदी का ही है, सब मेरे वीडियो हिंदी में है। तो जेफ बेजोस ने पूछा अमेजोन के हेड ने कि वॉरेन, आपका तरीका इतना आसान है और आप ट्रांसपेरेंटली सबको बता भी रहे हैं कि ऐसे ही करना है, लोग करते क्यों नहीं है? कहते एक ही कारण है, गेट रिच क्विक है। सबको चाहिए कि भाई अभी इंजेक्शन लगा दो मैं ठीक हो जाऊं, मुझे वो मेहनत नहीं करनी, और साथ में मुझे सीखना नहीं है, तीसरा पेशेंस नहीं रखनी। तो मार्केट का एक मूल मंत्र है कि द इम्पेशेंट मनी लूजेस टू द पेशेंट मनी। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, अगर आप डाइवर्सिफाई होकर लॉन्ग टर्म बैठ सकते हैं, हौसला रख सकते हैं, तब आपके पैसे कहीं नहीं गए, बनने ही हैं। कुछ कंपनियां डूबेंगी, बट जो बनेंगी वो सब आपका ख्याल रख लेंगी। मल्टी बैगर आज के दिन में स्मॉल कैप में जाइए, वो हम मैंने नहीं कवर किया, माफी चाहता हूँ। स्मॉल कैप्स में जाइए। अब स्मॉल कैप हमारे को खुद एनालाइज करने मुश्किल है। अगर आपका क्लाइंट है, लिस्टेड है, दिख रहा है, और कंप्लायंस वाइज इंस्टीट्यूट अलाउ करता है आपको, मोस्टली तो नहीं आप कर सकते, तो स्मॉल कैप्स में डाल सकते हैं। नहीं तो एक बहुत आसान तरीका है स्मॉल कैप का, ये मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च, जो भी है, ये ग्रो शो, ये जो भी नए नए बने हुए हैं जो लिस्टिंग करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो स्मॉल कैप फंड्स ढूंढिए, अच्छी कंपनी का हो, टॉप 5-10 कंपनीज में हो, और 10 से 1 साल का उसका एक्सपीरियंस हो, 5 साल तो हो मिनिमम। आप देखेंगे 22-23% रिटर्न दे रहा होगा 5 साल 10 साल की अवधि में। तो स्मॉल कैप फंड खरीद लीजिए, उसमें 40 कंपनियां फंड मैनेजर आपके लिए खरीद के लेके आएगा। ईटीएफ अभी हमारा नहीं आया स्मॉल कैप का, मिड कैप का ईटीएफ है, एनएससी 150 का भी, एनएससी 500, एनएससी मिड कैप का ईटीएफ आ गए हैं, तो वो जरूर खरीद लीजिए एसआईपी के तौर पे। बेशक 1,000 रुपया ही डालिए, जितना आप भूल सकते हैं डाल के भूल जाइए। स्मॉल कैप मिड कैप में डालिए, वो सब मल्टी बैगर आपको देंगे। वो बहुत आसान मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आज मैं आपको बताऊं, कल वो कंपनी का प्रमोटर मर जाए, कुछ हो जाए, जीएसटी रेड हो जाए, वो पीयूष जैन निकल आए, पंपी जैन निकल आए, क्या करेंगे? कुछ पता नहीं लगता है। तो एक और आपने मूल मंत्र हमारे दर्शकों को, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्रों को दिया है कि आपको पेशेंस रखना है। एक बार आप सही कंपनी सेलेक्ट करें, सही प्रमोटर सेलेक्ट करें, सही बिजनेस सेलेक्ट करें। अगर आपने एक अच्छे प्रमोटर की, अच्छी कंपनी के, अच्छे बिजनेस मॉडल पे अगर दाव लगाया है, हो सकता है शॉर्ट रन में वो उसके बावजूद भी शेयर प्राइस नीचे चली जाए, बट अगर आप स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो मल्टी बैगर स्टॉक जरूर बनेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रमोटर की कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो, प्रमोटर बड़े ईमानदार हो, वो अपनी वेल्थ को सबके साथ शेयर करने वाले हों। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जितनी लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर है, उनकी पर्सनल वेल्थ तो बढ़ती जा रही है, बस कंपनी की वेल्थ ही नहीं बढ़ती है। इस पे कहीं ना कहीं सरकार को भी देखने की जरूरत है कि अगर उन्होंने पैसा बनाया है और उनकी कंपनियों ने पैसा नहीं बनाया है, तो ऐसा क्या सोर्सेज है जो कि उनकी कमाई इतनी बढ़ गई, उस पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, अगर रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट से जोड़े रखना है तो ये बहुत अच्छा, सरकार को कुछ इस पे कदम करना चाहिए। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। योर व्यूज ऑन प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। अच्छे हैं, प्राइवेट लाइफ एंड इवन जनरल इंश्योरेंस भी देख लीजिए। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड बहुत अच्छी लगती है, तो प्राइवेट लाइफ भी अच्छा करेंगे। बहुत कम हमारे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है अभी तक, तो ये अच्छा करेंगी। और इनका गुड न्यूज क्या है कि प्रमोटर ने 15-20 साल जो
कैपिटल डालना था, सब हो गया। अब ये सब कैश जनरेटिंग है, बहुत जबरदस्त कैश जनरेटिंग करते हैं इन एन एक्सपैंडिंग मार्केट। अच्छे इनके प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। तो जनरल और लाइफ दोनों करिए, और LIC भी थोड़ा लेके रख लीजिएगा। LIC तो SBI है अपना, हमारे देश का गौरव है, तो वो भी थोड़ा लेके रखेंगे जरूर। कुछ नहीं है तो ग्रैंड चिल्ड्रन को दीजिएगा कि मैंने LIC IPO देखा था, वो भी कहानियां सुना पाएंगे लोगों को, जैसे लोग हमें सुनाते हैं कि भाई मैंने HDFC का IPO देखा था या रिलायंस का IPO देखा था। उस तरह से LIC जरूर लीजिए। क्योंकि हमारा समय लगभग समाप्ति की ओर है, तो मैं जो भी क्वेश्चन है आप थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, कुछ जी। उसमें मिस भी हो जाए। तो मेरा व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अब 9 दिन तक कंटिन्यूस पूछ रहे हैं, तो कोई मिस हो जाए तो और की जरूरत नहीं बहुत बहुत एक्सपर्ट आएंगे, ये आखिरी बार नहीं है तो है। और कभी व्हाट भी अबाउट, पूछा है मुकेश मांडावा जी, व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड? गोल्ड इस साल नहीं दिखता है ज्यादा जाते हुए, ये क्रिप्टो में पैसा जाने लग गया गोल्ड की जगह। तो वो भारत में हो, विश्व भर में हो, काफी वो ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, क्रिप्टो की तरफ जा रहा है। तो गोल्ड का डिमांड कम हो गया ग्लोबली, दैट इज वन थिंग। और इतने हाई इन्फ्लेशन में उम्मीद थी कि गोल्ड भी बढ़ेगा, बट गोल्ड ने कम दिया रिटर्न। अगला 1 साल तो ठीक नहीं लग रहा गोल्ड के लिए। जो ज्वेलर फ्रेंड्स भी हैं वो भी इतने नहीं है पॉजिटिव, तो थोड़ा दूर रहिए गोल्ड के लिए। खरीदना है तो वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2.5% रिटर्न भी मिलता है, कैपिटल गेन्स का भी उसमें बेनिफिट है, मेच्योरिटी तक होल्ड करिए तो वो एक अच्छा तरीका है। नहीं तो वाइफ के लिए गोल्ड खरीदिए, और महिला CA हैं आप तो अपने लिए खरीदिए, बच्चों के लिए खरीदिए, इट्स अ गुड थिंग। 5% ऑफ पोर्टफोलियो मैक्सिमम इन गोल्ड, उससे ज्यादा नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो है हमारा 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है, और सबसे बड़ी चीज उसमें जो जब मैच्योरिटी जब होगी तब आपको कैपिटल गेन टैक्स भी 0 लगेगा। तो आपका वाइट में पैसा जनरेट होगा और विदाउट टैक्सेशन होगा। अब इसी मोड पे हम, चूंकि बग्गा साहब के और भी कई सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि हमारे हर शॉर्ट नोटिस पे जब भी हमने बग्गा सर को बुलाया तब तब उन्होंने हमारे लिए तुरंत हाँ कर दी। उसके लिए वी आर थैंकफुल टू हिम। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर सेक्रेटरी CIRC शशिकांत चंद्राकर जी। शशिकांत सर आप हैं? और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स सर। वास्तव में आज का जो सेशन हुआ है, बग्गा सर ने जितने अच्छे से पूरा ग्लोबल फिनोमिना और इंडियन फिनोमिना और रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट जितने अच्छे से सरलता से समझाया, निश्चित तौर पे हमारे सारे व्यूअर्स, हमारे सारे मेंबर्स को ये बेनिफिशियल रहा होगा। और इनके जो बताए गए तरीके हैं, इनके बताए गए टिप्स हैं, इसको यूज करके डेफिनेटली दे कैन ग्रो देयर asset base. And I would like to thank all the viewers for patience listening in this webinar. I also would like to thank Sri Baggaji for sparing his most valuable time between us for this session. Also would like to thank moderator CA Deven Somani ji. In absentia, I would like to thank today's chief guest Abhay Chadir ji, Chairman CA Nilesh Gupta ji, and most of all, I would like to thank the office staff and officers of CIRC for making holistic support and all the arrangement for organizing this webinar. So thank you everyone for attending this webinar. Thank you. Thank you everyone. खान साहब खान साहब बंद कर दीजिए।